Battle for Maharashtra is at its very crucial stage. Today is the last day for withdrawal of nomination papers as both Mahayuti and the Maha Vikas Aghadi are making last-ditch efforts to pacify their rebels. There are about 39 Mahayuti rebels and 15 Maha Vikas Aghadi rebels who are currently in the fray. Uddhav Thackeray has appealed to the rebels to withdraw nomination or face action from the party, claiming that if you don't pull out in time, then you will be banned from the party for good. Meanwhile, BJP's rebel Gopal Shetty has withdrawn his nomination in the presence of Piyush Goyal, pledging support for the BJP now. This comes after Maharashtra DGP president has appealed to Mahayuti rebels to withdraw their nomination or they too will face a ban for the next 6 years. Now, amid the rebellion woes, Samajwadi party MLAs Sheikh has written to Maha Vikas Aghadi to make a 10,000 crore budget for Muslims and include common minorities program in the MVA's manifesto. Meanwhile, poll body has ordered the transfer of the Maharashtra DGP, Rashmi Shukla, after complaints came in, particularly from the Congress, the Maha Vikas Aghadi, claiming that she is biased in favor of the BJP. The Election Commission deciding to move her out right before elections. अनेकांनी अर्ज मागे घेतले सुद्धा आहेत. काही जण अर्ज आता मागे घ्यायला चाललेले आहेत. एक साधारणतः 3 वाजता ही मुदत संपल्यानंतर आता राहिले किती वेळ जेमतेम 1 तास राहिला तर 3 वाजल्यानंतर कोणी मागे घेतले कोणी नाही घेतले हे चित्र स्पष्ट होईल आणि जर का कोणी आम्ही सांगून मागे घेतलेले नसतील तर मग नाईलाजाने पक्ष त्यांच्यावरती कारवाई करेल. मात्र आमचा पूर्ण प्रयत्न आहे महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही एकत्रितच ही निवडणूक लढवत आहोत. त्याच्याबद्दल काय आता कोणाचंच दुमत नाहीये. सर्वांना जिथे जिथे परत एकदा सांगतो ज्यांचे अपक्ष किंवा बंडखोर म्हणून ज्या पक्षाचे उमेदवार उभे राहिलेत त्यांना आमच्या सूचना गेल्यात आणि तिथे काय होईल ते 3 वाजता स्पष्ट झाल्यानंतर पुढची आमची जी काय पावलं असतील ती आम्ही टाकू. इलेक्शन कमिशनने घेतलेला निर्णय अतिशय योग्य निर्णय आहे. माझ्या मते ही राज्य सरकारला संबंधित दिली ज्या व्यक्तीचा कालखंड संपलेला आहे आणि त्याच्याबद्दल जाहीरपणाने अनेक लोक बोलतात सत्तेचा गैरवापर संबंधीचं अशा व्यक्तीला एक्सटेन्शन देऊन त्यांच्या कालखंडामध्ये ही निवडणूक घेण्याचा प्रयत्न हा असणारा प्रयत्न होता. इलेक्शन कमिशनने योग्य निर्णय घेतला. आता ज्यांच्याबद्दल घेतला त्यांना जर स्वतःच्या संबंधी काही असेल तर त्या फदावर कायमच्या त्या राहता कामा नये. साहेब, माननीय पवार साहेब आणि उद्धव साहेबांशी चर्चा केल्यावर ते आपला अर्ज मागे घेत आहेत. असे अनेक उमेदवारांना इथून पवार साहेबांनी आणि उद्धव साहेबांनी फोन केले, संपर्क साधला आणि प्रत्येकाला सांगितलं की आपण अर्ज मागे घ्यावे. आज 3 वाजेपर्यंत साधारण चित्र स्पष्ट होईल. पण आमची भूमिका अशी आहे की कोणीही एकमेकाच्या विरुद्ध न लढता एकत्रितपणे काम करावे. लेकिन ये नालायक लोग बहन का अपमान कर रहे हैं. इनको बहन चुनाव में आने वाले चुनाव में हमारी बहना इनको चप्पल दिखाएगी और चप्पल दिखाकर जो महाराष्ट्र की सरकार जो ये वोट मांगने जाएंगे इनके ऊपर बहिष्कार करेगी और वोटों के माध्यम से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार लाएगी. हमारी लाडली बहन इनको चप्पल दिखाकर हमें मतदान करेगी. 2 दिन के पहले एक बात और 2 दिन के बाद में दूसरी बात करता हूँ. ऐसा नहीं, मतभेद कभी था ही नहीं. एक मुद्दे को लेकर जो भी बातें चली उसको हमने चलाया और मुझे लगता है कि सही जगह पर वो पहुंच गया है. और क्या हुआ कैसे हुआ ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं. पार्टी के नेता बहुत बड़े हैं, पार्टी बहुत बड़ी है. व्यक्ति हमेशा छोटा होता है, इससे मैं आज भी छोटा अपने आप को महसूस करते हुए मैं पार्टी के लोगों से भी कहूंगा कि मेरे से अगर कोई गलती भी हुई होगी तो उसको वो क्षमा करें. अपक्ष फॉर्म भरने की वजह एक थी कि पूरे शहर में मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधित्व चाहिए, सभी कौम से आवाज़ थी. वो आवाज़ के ऊपर मैं लब्बैक कहा और मैंने आगे बढ़ा. क्योंकि गई 40 साल से हम देख रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए हम दिलो जान से काम करते हैं. उन्होंने कई लीडरों ने हमें से वादा किया था कि मुख्तार भाई आप फिक्र मत करो, समाज को ये बारी का उम्मीदवारी आपको दी जाएंगी. इसलिए मैंने मतदार संघ के अंदर सभी कम्युनिटी के हमारे जो नगर सेवक है, महापौर है, जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट की थी विधानसभा, उन सबसे मुलाकात की और सबका मुझे पाठिंबा था. पर बदकिस्मती से हमारे जो नेता है
उन्होंने मुझे उम्मीदवारी नहीं दी तो मेरी थोड़ी नाराजगी थी और समाज का ये बोलना था आप लड़ो हम तुम्हारे साथ, तो मैंने फाइल नॉमिनेशन किया। Right now, the Chief Minister and the Deputy, Eknath Shinde and Devendra Fadnavis, both speak exclusively to India Today's Sahil Joshi on the rebel factor and how do they plan to pacify, persuade the rebels last minute. Here's what they had to say. आप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ शिवसेना के मुख्य नेता भी है और इसीलिए सीट डिस्ट्रीब्यूशन जब तीन पार्टी की अलायंस होती है उसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन काफी अहम होता है। क्या आप सीट डिस्ट्रीब्यूशन से खुश है? क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी को, आप कह रहे थे कि स्ट्राइक रेट आपका काफी अच्छा था लोकसभा चुनाव के वक्त पे, आपके स्ट्राइक रेट के मुकाबले, लोकसभा के स्ट्राइक रेट के मुकाबले असेंबली में भी आपको ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी, ऐसा आपको लगता है? देखो, हमको कितनी सीटें मिली, बीजेपी को कितनी मिली और एनसीपी को कितनी मिली, इससे ज्यादा मुझे अहम लगता है महायुति को जिताना, महायुति की सीटें लाना और महायुति जरूर जीतेगी, ऐसी हमारी कोशिश है। 2-4 सीटें इधर उधर होती है लेकिन महायुति सरकार को लाना ये अहम मुद्दा और टारगेट हमारा है। जरांगे पाटिल ने कैंडिडेट खड़े किए हैं, मैं उनकी लिस्ट अभी देख रहा था, मैक्सिमम कैंडिडेट तो बीजेपी के खिलाफ है, एकनाथ शिंदे के खिलाफ तो कोई कैंडिडेट ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये कहां से हो रहा है ये सब चीज? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम तीनों इस सत्य को जान गए हैं कि एक दूसरे के कैंडिडेट अगर हम लोग नीचे लाएंगे, उनको अगर हम हराएंगे तो सरकार नहीं बनेगी। इसलिए हम बहुत कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। कुछ जगह पर अभी भी बागी है लेकिन हमने ये तय कर लिया है कि जहां बागी है उनको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा, पार्टी में रखा नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहे हैं और जरांगे पाटिल इनकी लिस्ट अभी तक मैंने देखी नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं देना चाहता। All right, we're looking at a clash between the BJP and the NCP over Nawab Malik's candidacy. Maharashtra's Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis in an exclusive conversation calls NCP as confused, saying Nawab Malik will not win, will only campaign for Sena candidate. This is Devendra Fadnavis, who's put out a clear message that Nawab Malik, who's been given a ticket from the NCP Ajit Pawar camp, despite being an ally, Devendra Fadnavis says will not campaign for Nawab Malik. He won't win. A message coming out from Devendra Fadnavis, the Deputy Chief Minister of Maharashtra, the face of the BJP in the state. This comes after a huge backlash and criticism against the Mahayuti for giving a ticket to Nawab Malik, who they themselves claim had underworld connections. Now, Nawab Malik has been given a ticket from NCP Ajit Pawar camp. Fadnavis says won't campaign for him. Listen in. आपकी पार्टी ने साफ कह दिया कि हम नवाब मलिक को समर्थन नहीं देंगे और वो कैंडिडेट नहीं होने चाहिए, लेकिन नवाब मलिक वहां पर खड़े हुए हैं। वो खड़े तो हुए ही, लेकिन अजित पवार ने उनको अपना एबी फॉर्म भी दे दिया, उनको चुनाव में उतार दिया पार्टी के सिंबल पर। किस तरीके से आप देखते हैं कि आपको डिफाइंड एक तरीके से नजर आते हैं अजित पवार इस मामले में कि नहीं हमारा नंबर बढ़ाना है, हम नहीं सुनेंगे आपकी बात? मैं तो कहता हूं डिफाइंड नहीं है, कंफ्यूज्ड है, क्योंकि राजनीति की जो नब्ज है वो नब्ज अगर इस महायुति को कौन वोट देने वाला है ये वो समझ लेते हैं तो शायद ये फैसला नहीं करते। इसका मतलब वो ना समझे ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं। नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात हो गई है ना, बहुत होशियार है। उनकी बेटी महायुति की कैंडिडेट और वो सिर्फ एनसीपी की कैंडिडेट। हमने बहुत साफ शब्दों में कह दिया था कि हमको ये कैंडिडेट नहीं चलेगा, आपने इनको नहीं देना चाहिए। उन्होंने उनको बी फॉर्म दिया तो हमने शिवसेना के कैंडिडेट को खड़ा किया है, वहां हम शिवसेना का ही काम करेंगे और आप लिख लीजिए हम शिवसेना के उम्मीदवार को चुनकर लाएंगे। Let me bring in Ritik Bhalekar joining us for more on that. Ritik, please give us a little sense of the rebel factor that's troubling both the Mahayuti and the Maha Vikas Aghadi. And particularly speaking of Nawab Malik, we know that he's been given a ticket from Ajit Pawar's NCP camp, but their allies, BJP and Shiv Sena, are not on board with this idea. More on that. Today is the final day to withdraw nominations. How far have they managed to persuade them to pull out of the race?
Absolutely. After a series of meetings and deliberations, many of the rebels, both from Mahayuti front and as well as Maha Vikas Aghadi alliance, no one, most of them have not opted out of the electoral fray because obviously the large number of rebels seen on both the sides have become a big challenge for both the fronts. If we talk about Mumbai, Nawab Malik was the most talked about seat where Eknath Shinde faction has fielded Suresh Bullet Patil against him, while Devendra Fadnavis and BJP is openly opposing Nawab Malik, and they are saying that they will support Suresh Patil, who is Eknath Shinde's candidate, as a Mahayuti candidate. But at the same time, we should understand that this is the only seat which in a recent Lok Sabha poll gave a big setback to Mahayuti. They were lagging behind by 90,000 votes, and no one from Mahayuti was ready to contest on this seat. At the last fag end, we saw Nawab Malik pitching in, and he got the AB from NCP Ajit Pawar faction officially. And even Nawab Malik, in an interview with India Today, has openly said that he doesn't need any support from BJP or any of the Mahayuti allies, because the vote bank on which he is depending upon is not a BJP supporter. So it also arises a question that is it a tactful political settlement in Mahayuti? And we need to see that now that Devendra Fadnavis is claiming that only Suresh Patil, who is a candidate of Eknath Shinde faction, will win. We really need to see that how the political equation works there in that constituency. Nabila. All right, that's very interesting to note. Well, we're looking at a face-off within the Mahayuti alliance itself for that seat. Thanks very much, Hrithik, for joining us with those details. In the poll-bound state of Maharashtra, Prime Minister Modi slammed Uddhav Sena, particularly picked up on the statement made by UBP MP Arvind Sawant, calling China NC, though he denies it, but in reference to China NC, he said imported mal. Prime Minister Modi raking up the issue, saying derogatory remarks against women, mothers, sisters, shocked to hear mal remark by UBT Sena MP. Congress allies speaking against women. Maharashtra will teach the opposition a lesson. Prime Minister Modi wading into this controversy days after it happened and after China NC filed an FIR against Arvind Sawant. Arvind Sawant has apologized. Nonetheless, that legal case still continues. Prime Minister Modi speaking up on this issue in the poll-bound state. Listening. वोट के लिए ये जेएमएम और कांग्रेस वाले आदिवासी बेटियों का अपमान करने से भी नहीं चूकते। आज द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में देश भर के आदिवासियों की एक सशक्त आवाज हमारे पास है, लेकिन जेएमएम, कांग्रेस और इनके साथियों को आदिवासी महिला राष्ट्रपति बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये लोग उन्हें अपशब्द कहने का भी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। हमारी बहन सीता सोरेन के साथ इन्होंने क्या किया, ये भी हम सभी ने देखा है। कांग्रेस के एक नेता ने बहन सीता सोरेन जी के लिए जो कुछ कहा है, वो हर आदिवासी माता, बहन, बेटी का अपमान है। अभी महाराष्ट्र में भी एक बहन चुनाव लड़ रही है, कैसी गंदी भाषा का प्रयोग किया गया उनके लिए, ये इनकी आदत है। और आप देखिए, यहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से एक शब्द तक नहीं निकला। और यही जेएमएम की सच्चाई है। सत्ता सुख में जेएमएम को आदिवासी महिलाओं का अपमान भी स्वीकार है। I'd like to thank our Honorable Prime Minister for being a statesman of sorts.
the kind of faith he has reposed for all women. This is not about me. This is about the women of India who have been subjected to this kind of discrimination and this kind of, treating us like items and objects, which has been the normal practice of the opposition. Whilst none of the opposition leaders chose to speak, none of the women from their parties chose to speak. It is our Honorable Prime Minister that has brought it into the front and said how it needs to be condemned. This is the mindset we respect. This is the mindset that we should all acknowledge. And Mr. Sanjay Raut has said just the contrary and saying there's no reason to apologize and we will not apologize. And what wrong have we said? I mean, what are we... Here the mindset is about a person who's using the terminology mal, which is obsessively regressive, treating you like an item and objectifying you. And the hurt is not just to me, it's to the entire women of Maharashtra. All right, as that goes on, we're looking at bypolls across the country that will also happen simultaneously with Maharashtra and Jharkhand elections. Priyanka Gandhi, currently in Wayanad, who speaks with my colleague Akshitanand Gopal, giving us a lowdown on what she feels, how far has she been accepted by the people of that constituency. Let's listen in. To all the people I've been speaking to in Wayanad, ma'am, they call you as Priyanka Chechi. Do you feel a similar connect? Do you feel more home at Wayanad now than Delhi? I've been given a lot of love and affection here. People have welcomed me into their homes like family, and it's really touching. It is really also an honor for me. Have you been able to learn any Malayalam? Very little. Pattan. Yes. But why Wayanad, ma'am? None need so far. Why Wayanad? Did you ever decide or regret that you didn't do it a few months ago during the general elections? No, I didn't regret at all. I had taken a certain decision and I stuck by that decision. My brother is deeply connected to this area. He loves the people here. They supported him at a time which was very difficult for him. And it was difficult for him to leave. And I think that it's appropriate to be here because we want to continue that bond between him and the people of Wayanad and to continue to work for the people of Wayanad. What's your earliest and most poignant memory of Kerala? Earliest memory? Your earliest, most poignant memory? Even Wayanad or Kerala? I mean, in Kerala, I would say coming here to Wayanad, really, the time I came here during the landslide, it was something I'll never forget all my life. The kind of pain that I saw and the kind of resilience, the courage of people, that was something that really moved me, and also just to see the extent of the devastation and yet to see people reacting to it with such dignity, with so much courage, having lost everything, but still all of them coming together to help each other. That is not only a moment that I will remember, but it is a lesson for all of us and for the whole country. Is that your number one priority then, landslide compensation, rehabilitation, or is it the night travel ban? Is it the medical college? See, those are the issues that we have to work on, and for which we need to really put pressure on the state government and the central government to release the funds for compensation, and also these issues of the night ban and the man-animal conflict. But over and above that, we need also vision for Wayanad. It has so much potential. You know, in tourism, it has so much natural beauty. We need to strengthen all that. We need to strengthen job opportunities that will come through strengthening the tourism industry, agriculture, the products, coffee, rice, cinnamon, all the products that are produced by farmers here, marketing them properly, giving a push to food processing, to market, and again creating jobs through that. I think there has to be a comprehensive vision. And I'm working on that, and I will talk to people once the election is over. I'll talk to people and come up with something. All the very best to you, ma'am. Priyanka, ma'am, thank you very much. Or should I say Priyanka Chechi? Thank you. Priyanka, ma'am, there's someone here who wants your autograph. Do you feel a bit like a celebrity here in Wayanad, ma'am? Actually, I feel more like family here. Thank you so much. Ma'am, pull the mirror down, ma'am.
right, we have some update coming in on the Muda case. Lokayukta has summoned Chief Minister Siddaramaiah. The Anti-Corruption Bureau in Karnataka, the Lokayukta, has summoned Siddaramaiah on the Muda scam. Mysuru Lokayukta police have issued a notice to Karnataka Chief Minister Siddaramaiah in connection with the Muda case. The notice directs the Chief Minister Siddaramaiah to appear for questioning at Lokayukta office in Mysuru on the 6th of November. Remember, you have the Enforcement Directorate also probing into this case. They've conducted raids multiple times on properties and offices associated with people involved in the Muda scam. Now you have the Lokayukta coming in and summoning the Karnataka Chief Minister Siddaramaiah. A notice has been sent out to him. Siddaramaiah will have to appear for questioning at the Lokayukta office in Mysuru on the 6th of November.